ओके, तो कमारू उस्मान का दिमाग ऑफिशियली खराब हो चुका है. Ladies and gentlemen, welcome back to another video. How can I stop making videos जब इस महीने इतनी सारी fights है? I just can't. I can't help it. I want to talk about this shit. इस weekend we have निशान देव, obviously इंडिया का सबसे बड़ा बॉक्सिंग प्रोस्पेक्ट इस वीकेंड लड़ रहा है. उस फाइट के इमीडिएटली बाद we have उस्मान बकली. What a matchup, first of all. It sounds very cruel कि कमारू उस्मान 2 साल के बाद आ रहा है and UFC ने उसको Joaquin Buckley दे दिया. Like anyone, बिलाल मोहम्मद, चलो बिलाल तो नहीं लड़ सकता, Ian Gary, Sean Brady, Leon Edwards, again, whoever, right? जो भी, anyone except Buckley, and I would have said शायद उस्मान जीत भी सकता है, you know? लेकिन the fact that you put him against Buckley is just, it's like a manslaughter, like a goat going for sacrifice. बिल्कुल वैसा है मेरे ओपिनियन में. Kamaru Usman's knees watching an oblique kick coming. अगर हम welterweight rankings देखें, we have JDM champ बिलाल मोहम्मद जो अभी हारा था, शॉन ब्रेडी जिसने लियोन एडवर्ड्स को हरा के नंबर 2 बना, शाफकात जो हमेशा आउट रहता है, उस्मान, इयन गैरी, वाकिन बकली. एंड ये सब बोलते रहते हैं कंसिस्टेंटली कि मैं नंबर 1 कंटेंडर हूं, आई शुड बी द वन फाइटिंग फॉर द बेल्ट. और ये बंदा लाइट वेट का सबसे डोमिनेंट चैंप अब इस डिवीजन में आ चुका है. दैट हैज मेड दिस इवन मोर केओटिक. welterweight is hands down the most stacked division in the UFC right now. You got Kevin Holland जो अभी आ गया, माइकल पेज भी है, कार्लोस प्रातेस, जॉफ नील, Michael Morales. Oh my god, it's a ridiculous division. Gilbert Burns at prime, Usman struggling to stand up straight. Imagine what Buckley is going to do to this MF. Prime Gilbert Burns, we miss you, brother. You were a beast. Chimaev और Burns की जो fight हुई थी, that is one of the greatest fights I've ever seen. Seriously, what? Insane. Buckley right now, it's just the wrong matchup. And Kamaru Usman का जो दिमाग है वो इधर है. ये सुनो. Your path there. My path there. Oh, just pretty simple. I just lay out the map right here. Is finish Buckley this weekend, and then wait for the winner of I believe Islam and JDM. Dude, I am not doubting this guy, okay? ये बंदा was one of the most dominant UFC champions in history. I don't care what you say. He absolutely sent Masvidal to another planet. Colby Covington को इसने 2 बार धो दिया. He was being compared with Prime GSP. Seriously, people were actually doing that. लेकिन now when he says I'm going to finish Buckley, I'm not even going to beat Buckley, I'm going to finish Buckley. I believe Islam and JDM, which is going to be an incredible fight. Such a great thing now having Islam come up into the division. You know, who wouldn't buy a ticket to that? Former pound for pound and current pound for pound. And I love Islam. Islam's a great fighter. I think that's something that we will both remember forever. Win that and wait, he just said he would win against Islam Makhachev at 38 years old. Bro, I really don't want to like criticize, or they're fighters, you know, I always say this ki they have to believe more than we do. That's their life. This guy was pound for pound number 1. 6 titles ye jeeta hai. Lekin at this stage it sounds a little bit unrealistic, right? कि मैं बकली को फिनिश करूंगा, इस्लाम JDM का विनर मेरे को मिलेगा. भाई, ये जो सारे लोग हैं, these people who have been active, I think they deserve a better chance rather than Usman sitting out after 3 consecutive L's. Like, just being real, right? To say कि Islam Makhachev अब मेरे को मिलेगा, it's a bit unfair. I believe AK go up. Myself बीट इस्लाम और फिर वेकेट करके गो अप.
to 185 pounds. Dricus Du Plessis, if he is the champion, or Hamza Chimaev too, if Dricus is no longer the champion. We do that if Dricus is the champion, we do that in the first card in Africa. I mean, that's another blockbuster too. These are back-to-back blockbuster fights that you tell your grandkids about, and who wouldn't watch those? And so, and then after that, now you're sitting with 2 belts, and it's like, what do we do next? So that's, I would say, long-term goal in the back of my mind. Listen, boys, suno. That is a great plan. To be fair, not even being funny, I think that's a great plan. कि मैं बकली को फिनिश करूंगा, ठीक है, फिर JDM इस्लाम का विनर के अगेंस्ट मैं फाइट करूंगा. He thinks इस्लाम जीतने वाला है, then him versus इस्लाम. Kamaru Usman former pound for pound number 1 था, इस्लाम current pound for pound number 1 है. That's a blockbuster fight. Correct, मैं मान गया. इस्लाम को हरा के वेल्टरवेट टाइटल को वेकेट करके ये जाना चाहता है अप टू मिडिल वेट 185 पाउंड्स पे, और तब ही वांट्स टू फाइट द विनर ऑफ DDP वर्सेस चिमाएव. अगर DDP जीता तो ही वांट्स टू डू इट इन अफ्रीका, बिग फाइट, बोथ अफ्रीकन्स. अगर चिमाएव जीता देन व्हाई नॉट अ रीमैच ऑफ दैट वेरी क्लोज फाइट जो आबू धाबी में हुई थी, वेर ही हैड टू स्टेप इन ऑन शॉर्ट नोटिस. फ्रॉम द साउंड ऑफ इट, इट साउंड्स ग्रेट. लेकिन ये एंड में जो उसने बोला, ये जरा सुनो. So, and then after that, now you're sitting with 2 belts, and it's like, now you're sitting with 2 belts. Welterweight and middleweight. What do we do next? So that's, I would say, long-term goal in the back of my mind. That's the long-term goal. The only problem is, mate, that you're 38 years old. That is the only problem I think you forgot about. And not to mention Usman's knees, which are notoriously said to be very, very bad by himself. He's always had problem with his knees, and they've always been sort of weak. Like, Kamaru knows the end is near for him. Kamaru's got some fucked up knees. It's amazing that guy fights as well as he has. The kind of pain that he has. He told me that he had to walk on fucking grass because he couldn't walk on concrete because it hurt so bad. Like, Kamaru knows. ये पहली सेंटेंस सुनो. The end is near for him. Kamaru knows the end is near for him. इसकी डेट दिखाओ. Feb 13, 2023. हम है जून 2025 में. उस्मान कहता है कि इस्लाम को हरा के मैं जाऊंगा DDP और चिमाएव के विनर के अगेंस्ट. बेयर इन माइंड कि उस्मान कभी मिडिल वेट पे नहीं लड़ा है. वी कैन सी चिमाएव और DDP कितने बड़े हैं. लाइक DDP इज ऑलमोस्ट एस्पेनॉल साइज. आई डोंट नो उस्मान क्या हो गया है उस्मान को. ही इज नॉट बीइंग रियलिस्टिक. ठीक है भाई, तू चैंपियन था, तू पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 था. नोबडी कैन शिट ऑन यू फॉर हैविंग अ प्लान लाइक दिस, राइट. तूने सब कुछ अचीव कर लिया स्पोर्ट में, 6 टाइटल्स जीत गया तू. लेकिन मेकिंग स्टेटमेंट्स लाइक भाई अच्छा 2 चैंप्स एंड दिस इज माई लॉन्ग टर्म प्लान. Bro, you're 38 with broken knees and 3 of your last fights were L's. You think you can beat Islam Makhachev, the pound for pound number 1? Like, तू लियोन एडवर्ड्स को नहीं हरा पाया. एंड लियोन एडवर्ड्स को तो भाई इस टॉप 10 में आई थिंक कोई भी हरा देगा. नो बुलशिट, एक्सेप्ट कोबी कॉविंगटन ऑब्वियसली. लेकिन आई थिंक even Geoff Neal, Carlos Prates, you just don't deserve a title shot like that, bro. ये जो सारे contenders है, Ian Gary, Sean Brady, Shavkat Rakhmonov, जिन्होंने actively अपनी पूरी win streaks रखी है to be number 1 contender. अब तू बकली को हरा के number 1 contender बन जाएगा. First off, there's no way you're beating Buckley. Sorry bro, I love you, but there's no way. It's been 602 days since Kamaru Usman last fought. 602 days, coming off 3 losses. देखो अभी डबल चैंप बनना है at 38 years old. देख, I respect the ambition, I respect the drive. तू एक चैंपियन है,
तेरे पास एक विनर्स की मेंटालिटी है, मैं वो जानता हूँ, बट इट्स जस्ट क्रेजी. यू कांट डिसमिस ऑल द टॉप कंटेंडर्स, यू नो, जो वेल्टरवेट पे अभी है, जिन्होंने हकदारी से अपनी रैंकिंग अर्न करी है, एंड नाउ यू थिंक दैट यू गेट लाइक सम कॉनर मैकग्रेगर ट्रीटमेंट क्योंकि वापस आ चुका है. It doesn't work that way, and there are bigger stars at welterweight than Usman right now. That's the harsh reality. A lot of things have happened since Kamaru Usman last fought over 600 days ago. Merab was not a champ. Alex Pereira had not won the light heavyweight belt. Tom Aspinall was not the interim champ, and Ilia Topuria was not a champ. And listen, I am glad to see him back. I don't want this video to turn into a hate watch, and I genuinely, मेरे को कमारू उस्मान बहुत पसंद था एज अ चैंपियन, प्योरली बिकॉज वो किसी को ना नहीं बोलता था, एंड बिकॉज वो इतना डोमिनेंट था. ही लिटरली टुक लैप्स अराउंड हिज ओपोनेंट्स. मासविडाल को 2 बार हरा दिया, और इस फाइट में तो उसने उसको ठोका था बहुत बुरी तरह. ओह माय गॉड. Joaquin Buckley is coming off devastating wins. मतलब स्टीफन थॉम्सन को इसने रिटायरमेंट में भेज दिया. कोल्बी कॉविंगटन की आंख को मतलब खोल दी पूरी तरह. एंड Joaquin Buckley और कोल्बी कॉविंगटन की फाइट वाज एक्चुअली वन ऑफ माय फर्स्ट एवर वीडियोस. तो गो चेक दैट आउट इफ यू हैवंट. टेल मी हाउ यू गाइज यूज्ड टू लाइक द वीडियो बैक देन. ही इज 31 years old. Kamaru Usman's 38, coming off 3 brutal losses. This matchup, I think, was the worst matchup the UFC could have made. What do you guys think? Do you guys think Usman के पास वो capability है कि वो अभी तक वापस आ सकता है? Can he still make a title run? And does he deserve to be #1 contender अगर वो बकली को हराता है? Tell me your thoughts in the comments. Thank you for watching, boys, and peace.